the screen. Okay, so I've shared my screen. I'll open the VS Code. In VS Code, I've already through React app, I have tried to just make a basic React project code. This is the default one, correct? Using create React app. Okay. Now, I'll ask a very basic question here. Okay. If whatever you're saying in this thing, is it a real DOM or is it a virtual DOM? Real DOM. Real DOM. Okay. What do you say, Karan? This virtual one? Okay. What about you, Namneet? What is this? It is. I think it's real DOM. You think it's real DOM? Okay. So, how can you define real DOM, Navneet? Like, what do you mean by real DOM? So like virtual DOM is like. Your voice is a little bit low. Yeah, your voice is a little bit low. Yeah. Am I audible now? Audible, but I guess still the volume is a little bit low. Are you using headphone or what? Correct. I'm on the loudspeaker. Okay, yeah, because your voice, I am able to hear, but very, very little. That voice is very. Karan, what is the real DOM? Sorry. What is a real DOM? Real DOM. When you say real DOM, correct? What do you mean? Whichever the React use. No. Okay. Sachin, what is a real DOM? So real DOM is a structure that we see on the HTML browser that is manipulated by HTML. Okay. So we can say more precisely, real DOM is nothing but whatever is the HTML rendered on your browser is the real DOM. Simple. Yes, sir. Whatever you see, let's suppose you see this image is there, huh? This text is here, this link is there. If I right click here and say okay, view page source, I will see that this is my real DOM. Yes, Okay, sir. but this is actually when you do view page source, right? Now the question is that if you see this page source, edit, save to reload, learn React. If I do Control F, learn, I can't find learn React is there. The text is there. Why that link is not visible in this? When I do view page source, I'm not able to find that thing. Correct? This learn React. Okay. Yes, sir. Why it is so? So backend code is manipulated by virtual DOM. That is their job. Backend code. No. The source code that we written on the Mhm. browser, that is all those are rendered. Correct. You're saying that this HTML is coming from the server. Yes, sir. So this is the initial when we say view page source, that is the initial HTML received from the server. तो ये जो आप HTML देख रहे हो ये सर्वर साइड से आया है, ओके, लोड होके आया है, ठीक है. सो ये जो पेज है दिस इज कमिंग फ्रॉम सर्वर साइड, लाइक ऑब्वियसली दिस इज अ वेबसाइट, करेक्ट. तो ये कहीं से तो पेज आएगा ना, ऑब्वियसली एक वेब सर्वर से आता है. तो ये जो आप HTML पेज देख रहे हो इज कमिंग फ्रॉम सम वेब सर्वर, okay, and getting loaded here. But JavaScript, does it execute on the client side or React side? When we want to execute a JavaScript
code on the browser on a HTML page, will it happen on the client side or the server side? Client side. Servers. No, client side. Client side. Because JavaScript will only run in the browser. Browser. Sachin, I'm talking in terms of a web page, correct? In web page, you can't run JavaScript, correct? You can't run the web page on the server. Web page will be always running in the client on the browser, and there the JavaScript code will execute. So here whatever you're writing, you need to enable JavaScript and all those things. Whatever is the React code, it will run once this page is loaded. अभी तक ये पेज लोड नहीं हुआ. Once this page is loaded in the browser, you will see this will also get loaded. Okay, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ. Suppose I go here in the settings. I go and I say अच्छा settings में privacy security में I'm not sure privacy security is security में ही आता है या I have to turn off the JavaScript. From where I do that? From where I can turn off the JavaScript. Where's that? Permission one. Permission one. Permission? Where is that permission? Permission. Accessibility, I think. No. Okay, yes, HTML. site is cookies and site. Site information. Yeah. Site settings. So there is a option here. JavaScript. Correct? We can disable that thing. Don't allow sites to use JavaScript. Do you know this thing? JavaScript is not mandatory. अगर हमारा browser है तो we can also disable JavaScript कि नहीं हमें JavaScript नहीं allow करना है. It's possible. It's up to you. Okay, because in the early days of websites, there was no dynamic pages. Client side पे JavaScript था ही नहीं. Only it was HTML in the initial days when the web browser was launched and all those things. So उस time पे ऐसा ही था. So if I go here, if I reload this thing, see what is happening. Can you see? What is this? You need to enable JavaScript to run this app, correct? Can you see this text? Yes, sir. If you see this view source, in the body you have only this, na? See na this thing. In the body, can you see this thing? तो HTML में जो डिस्प्ले होता है वो कहाँ से आता है? बॉडी से आता है. तो बॉडी में तो ये इतना ही टैग है, इतने ही टेक्स्ट है. यू नीड टू एनेबल JavaScript रन दिस कोड. तो देखो क्या हो रहा है. Because JavaScript is not enabled, this is not running. And when we enable JavaScript, it will run. And that time the React library will run. The React library, okay, on JavaScript, whichever is there, will run. And then you will see that it will now render all these things. And this is happening through JavaScript on the browser. Okay, let me ask this question. I'm asking this to Navneet. Okay, Navneet, can you hear me now? Yes, sir. Okay, so does this is my Chrome browser or any Chrome browser or Mozilla browser, whatever browser you are using. Does my browser understand how to render a React page? Does it understand React? This is my browser. Okay, does it understand React? How to render React page or React DOM? Does it understand how to deal with React.js? I'm not getting it. Okay, I got it. So, same question I asked to Karan. What do you say? Yes, it is. So, browser understand React.js. What do you say, Sachin? Sir, I think, sir, Babel helps to convert the JSX to understand the language so it can be visible on. Babel doesn't help for JSX. Babel is for ES6. Because we import the React and Babel is for EX6 to ES5 conversion, है ना? Like Yes. it is not for JSX. So I'm we talking import about real DOM and React DOM. Yeah. So that That's is what I'm why. asking. So that is what I'm asking.
does browser understand the React code? Let's suppose this is my React code. This is whatever I've written, app.js, function, and all those things. And then we have this, and then we have whatever we are doing here. Does JavaScript understand this code, or how does React works internally? So it React works converts that code into Hmm? the understand Into what? plain JavaScript. JSX. HTML JSX, and HTML. JavaScript code. Yes, actually, the browser. No, browser क्या होता है? This is my browser. We load HTML in this page, correct? It doesn't understand what is Angular, what is React, what is jQuery, या कोई नया library तुम बना लोगे मैं बना लूंगा. Possible ना? React किसी ने नहीं बनाया है, correct? You can tomorrow also you can get your own library. And so Java, your browser, Chrome browser, any browser, को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप React यूज करते हो या आप Angular यूज करते हो, कुछ भी आप यूज करो, कोई भी लाइब्रेरी बनाओ, whatever approach technique you use, doesn't matter. The concept is very same, very simple. What concept is simple? First time क्या होगा? ये जो पेज लोड होगा ये किधर से आएगा पेज? This will come from where? This HTML page will come from where? React DOM No, no, I'm asking this. No, server. server. Yeah. So this page will come from. This is HTML tag, ना? What is a HTML page? It is just HTML tags, ना? तो जो भी ये HTML tags and पूरा ये जो structure है, this is the real DOM. This real DOM will come from the server, the initial one, the starting one, correct? तो जैसे इनिशियल लोड होगा तो ये जो भी आपको सर्वर से मिलेगा वो लोड हो जाएगा. Once that get loaded, then whatever JavaScript you have written in this, there's a JavaScript. See, this is a link. This is a JavaScript bundle.js. ये यहाँ पर लिंक है, तो this is entire JavaScript. Okay? तो क्या हुआ कि इसको पता नहीं है कि ये कोड रिएक्ट का है या एंगुलर का, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ डज इट नो ना? ठीक है, दिस इज नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट, प्लेन एचटीएमएल. इसको तो नहीं पता ना कि व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, करेक्ट? सो दिस इज अ प्लेन एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट लिंक पता है कैसे हम लोग डालते हैं रियल डॉम में? स्क्रिप्ट टैग देके हम we can put an external JavaScript file. So this is external JavaScript file which contains the function whatever is needed to run the React code. ठीक है, वो सब कुछ इसमें है. ठीक है, this everything is there. See, lot of code is there. It's a big code, big bunch of code. So everything is here. How to run a React code and all those library. Entire library is here. And how does it run? Doesn't matter ना. See, browser को क्या समझ में आता है? Only JavaScript. Okay, how does it internally is working? How does it is doing manipulating the real DOM? It is also manipulating the real DOM ना. This is अगर real DOM को manipulate नहीं करेगा तो how your real DOM will get changed? तो React is manipulating the real DOM, but उसका हमें पता नहीं है कि how does it do? Okay, we don't care. हमको क्या करना है? सिर्फ वर्चुअल डॉम से मतलब होता है कि JSX में हम मॉडिफाई कर देते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग में अच्छा ये JSX भेज दो, अगर ये स्टेट चेंज हुआ तो प्रॉप में चेंज हुआ तो ये स्टेट भेज, ये JSX भेज दो. तो अल्टीमेटली but how does it manipulate the real DOM? We don't care. That is the job of React engine. React has an engine ना, इंटरनली कुछ तो उसका इंजन होगा ना, कुछ तो उसका मोटर होगा, है ना? some technique would be there ना. So उसके थ्रू वो रन करता है. So basically what is happening, React, it is wrong to say that okay browser understand React. No, browser only and only understand, I'm repeating this thing, only and only understand HTML and JavaScript, that's it. बाकी उसको समझ भी नहीं आता है कि वो what is React, what is Angular or any other library, उसको कुछ पता नहीं है. सिंपल है ना, simple. Whatever React is a library, it's built on the top of JavaScript. Okay, React is not a new. Just giving direction to Yeah, create the yeah, React is not like a new thing, no. It's just a library somebody has made to make your life easier. Because अगर आप real DOM में जब मान लो कि suppose the React library was launched 5 years back, 6 years back, or 8 years back, I don't remember. So before that React was not there. तो क्या ब्राउजर नहीं था क्या? तभी ब्राउजर था, तभी HTML था, तभी JavaScript था. All things were present that time also, ना. वो तो उस समय भी था आपका. So React is a library built on top of JavaScript. Similarly, Angular was also early, from before React. Angular was there.
Okay, and Angular was is still very popular. Also, it was also very popular in the market, and it is still used. But browser didn't understand what is Angular also. अभी Vue.js है, Backbone.js है, कितने सारे libraries है. Or you will find so many libraries are there. So JavaScript, this React is also like a library. There's nothing more. We are thinking it's a complete new tech. It's a new technology, but for a browser, it's not a technology. It's a library. समझो ये डिफरेंस समझो है ना. For a browser, it doesn't care ना कि ये React है कि क्या है. So are you getting the point? Any confusion in this thing? सर जैसे कि ये रिएक्ट एक शेफ की तरह है, हम लोग इसको ऑर्डर दिए कि खाना बनाओ, अब क्या बनेगा कैसे बनेगा उसका काम है. बिल्कुल वही बात है ना. तो इसको इसी को तो बोलते हैं ना. अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे, ऊप्स का कंसेप्ट रहता है, दिस विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक पिलर होता है, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि व्हाटएवर भी, अभी सपोज यू वांट टू ड्राइव अ कार, उसके लिए यू डोंट नीड टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर ना. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, करेक्ट. वो इंजन कैसे काम करता है, कैसे क्या कनेक्टेड है, वो पॉसिबल नहीं है ना. सो अपना काम करो एंड गेट द वर्क डन. सिंपल. वी आर इंजीनियर्स हम. ओके. एनीबडी can work the things given. Abhi suppose tomorrow you'll go and work in a factory, manufacturing factory. So it does not mean na ki you will know everything. Abhi suppose Tata company is making cars, but Tata is buying engines from Fiat or some other companies. They are buying some filters from Bosch company. So ऐसा नहीं होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग अलोन. आई नीड स्पेशलाइज्ड जॉब. तो स्पेशलाइजेशन जिसका होता है हम उसका सर्विस यूज करते हैं, गेट द वर्क डन. अभी सपोज रिएक्ट में हमें बहुत चीज नहीं मिलता है, यू टू इंस्टॉल सम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आल्सो, है ना. रिएक्ट इज नॉट कंप्लीट लाइब्रेरी, दैट इज द बैकबोन. वंस दैट इज मेड, यू नीड कैलेंडर्स, यू वांट टू इंटीग्रेट, समटाइम्स यू नीड टू इंटीग्रेट मेनी थिंग्स, पिक्चर, carousel, बहुत चीज होता है. अफेक्ट यू वांट अ पर्टिकुलर फॉन्ट, तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. So it's like that. So Sachin, you are correct. Yeah, but I guess this is now getting cleared. Okay. Now I will give you a simple question. Then what is the difference between real DOM to समझ में आ गया? What is virtual DOM then? Whatever changes we make. Okay. But how can you see? I can simply define this is my real DOM. DOM Yes, created by the React. DOM created by React is this only, na? No, this is suppose to real DOM. No, but abhi suppose this is my I can see na, learn React is there, है ना. So some React library has inserted this into the real DOM only. This is the real DOM which you see in front of your eyes. Yes, sir. Okay, but React has done this thing. So this is real DOM. Then what is virtual DOM? So lightweight version of DOM, just controlled by React. No, so show me in this. Suppose I want to check where is the virtual DOM, where I can go and check the virtual DOM. I want to check. This is the real DOM. I can check here. No, this is the image. I can right click. I can see the image. अच्छा ये image है. I can see that. See, this is the image. है ना? I can see that. Not the issue. See, image is coming, correct? ये तो real DOM हो गया. But if I want to check the virtual DOM, how can I go and check virtual DOM? So we can't check. We can't check at the exact virtual DOM, but something we can check. Where we should go and find that thing. Okay, so basically, I'll give you. When we go in this is what? This JSX is what then? What is this? Is this real DOM? Div tag, header tag, all this is real DOM? Class name. Virtual. This is not. This is JSX, na. It is nothing but it is equivalent to a virtual DOM only. It's a part of a virtual DOM. You can say. Okay.
So virtual DOM is nothing but React is maintaining its own object. We can say its own tree structure. ठीक है, ट्री मतलब कुछ नहीं है, HTML टैग है, HTML के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर, तो दैट इज लाइक एन ट्री फॉर्म है ना, एक HTML इज द रूट, देन उसमें ब्रांचेस होते हैं ना. सिमिलरली React also maintains its own version, बट उसका वो वर्जन मिलता किस कहाँ से उसको, जो हम देखे वही तो मिलेगा ना उसको. तो जो हम अपने कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये रिटर्न करो, दिस इज ओनली योर वर्चुअल डॉम ना. व्हाट एल्स इज वर्चुअल डॉम? बिकॉज सी, because what happens, okay, I will make a, I will give you a simple, I will ask you a simple question. Suppose I go here, I will go and view page source. Okay, now suppose div id equal to root, correct? Now tell me, suppose I want to display something in between this div id equal to root here, but that I want to do, where I can do that thing? Means what I'm trying to say, I want to write some code, okay, in React, which will change the content between this div id equal to root, where I can do that thing. In Can I, between the div, you will insert another tag. okay, suppose I want to change this div id equal to root and I want to insert some value here. Okay, how can I do in the React code? Can I do that thing in any in the React code? Index.js, Index. Index.js, what I can do? render, Okay, real DOM and render. no, I'm not getting it. What I should do, like क्या करना पड़ेगा? It's React DOM dot root We dot can render. either go for create root or directly react DOM.render. Okay, you're saying that React DOM dot Render. render. I don't think render is a method here. Render Is it? method. No, Function way. no. It's a method of this root render, but it's not a method of the React DOM directly. Okay. You're saying I got it. What you're trying to say that I can go here and I can simply say welcome. Okay, and I will not use this thing. You're saying this thing. Then it will render welcome. That you're saying? No, but what I want, I don't want like this. I want I want a different thing. I want it in some component. See, this inductor, this is not a component. You know? Component is your app.js. Okay. In some component, in this component or whatever component, I can access the real DOM and change the value. How can I do that? Can I do that? Can I access real DOM inside this component? No. No. Why? Assume, can we access? We can add only. Sir, we can access by putting the plain JavaScript codes. Correct. So what code should we write to change the value of that divide root? So, React DOM dot create root dot Document dot get element by, ID. and then the value is the root. The root is the ID. Dot inner HTML. HTML equal to, I will say welcome. Okay, whatever I will write. Now see what happens. If I try to run this thing, it's coming welcome, but it will be confusing because you think it's coming from here. So I will change the name. Welcome. Index page is not saved. Oh, sorry, it's not saved. No? Okay. Now if I do, see it's
Is it saving? It's not saving, no? It's not changing, no? I've written that code, document.element by ID. Where is that? app.js, no? In a HTML also I've written. But nothing is happening. Why? Can you see? This should be here. Okay, suppose. So we didn't imported React, I think. I'm sorry. We didn't imported React. No. It's not like that. See, suppose I go here. I want to alert. What is the inner HTML? Will you give me the value here in the React code? Or no? It will not give me. You know what is in HTML? To view the content on the screen. See, welcome section is coming. Now it's visible. No, that time. Okay. Go check. Save this thing. What is happening? Sometimes it is coming, sometimes not coming. Why it is so? Save, no? It's saved on this. Root inner HTML welcome section. Return it. Return what? Write in return. It whole statement. This one? No. This is not a return. The return is for for JSX. This we can't return. This is like okay. This will come. Why? Because we are not returning anything. Na? This JSX, this component is of no meaning. Correct. Because here this component we didn't return anything. No? Because if we do return this thing, again it will try to create a what I can say. What I will say. Virtual DOM which will override this thing. Hai na? So that's why you not change the changes. Otherwise the changes is done. So this is wrong to say that we can't access the real DOM inside the React code. This is not React code. This is JavaScript code. Understand this thing first. This is wrong to say this is a React code. This is no. This is a JavaScript. This is all is JavaScript. So ultimately, if it is a JavaScript, then this code is also perfect valid because this JavaScript runs under what? On the browser only, no? So obviously we will be able to access any plain JavaScript code, whatever you want. You can use that code here. You know? It is wrong to say that we can't access plain JavaScript. We can't run. Or we can't access real DOM in React. We can access. We can do that thing as you see that. Okay. So are you getting what is real DOM? What is virtual DOM? No. Yes, It's sir. still confused. Okay. Now last question and we'll stop. You know. So this thing which we are returning, correct? What is the data type of this thing? Navneet, what is the data type Yes, of sir. this? Answer me from the JavaScript perspective. Forward about React. From JavaScript, what is the data type of this? This is a value only. So what is the data type of this? I can do now. I can write now. Where x equal to this. This is a value only. No? And once I can do this thing, then I can say now return x. That will also return the same value. No? So if this is a value, every value will have a type. Okay, this I'm able to store
this thing in a variable x, and I'm able to return that variable x. It's running perfectly. See, no problem. My point is that what is the type of the value which x is storing? What is the type? What is Object. object? Okay. Do you agree, Nanit? Karan? No Is it idea. an object or what? No idea, sir. No idea. Okay. Navneet, you have idea about this thing? No, sir. No. Okay. So actually, suppose I go here. Hmm. Hmm. Okay. I'll remove this import here. It's running. Hmm. Hmm. Here comes to we have to import in. Okay. So basically, what I'm trying to say is that this entire thing is your JSX, correct? But what is a JSX? JSX is ultimately nothing but a JavaScript object. Because whatever you write gets converted into a object because, as I told you, this is a JavaScript library, correct? So JavaScript में तो types limited है ना. One type is your number, one type is your boolean, one type is your string. Then we have object, then we have functions, and then arrays and all those things. So we don't have JSX in JavaScript, correct? So this is just for representation purpose, and this is for developer ease, है ना? Developer can easily understand this syntax. Developer को क्या लगता है कि ये HTML है. आपको वही लगता है कि HTML है, but this is not HTML, this is JSX. But ultimately, it's also, JSX is ultimately converting into a JavaScript object. This is what is happening here. Okay, this is getting converted into a JavaScript object. Okay, तो अब ये थोड़ा सा because see every React page will have a root. ना ये root होता है, and in this root you mount the parent or the root component. The root होता है, this is a big object, this is an entire object है ना. Just think like that, your React DOM or virtual DOM, okay, suppose I will say your virtual DOM is nothing but it's actually a what I will say, it's actually a JSX, which is actually an object like this. ये root है, root में क्या होगा, I will say okay, the root element is what, the name is app, उसमें क्या डिस्प्ले करना है वो रहेगा, ठीक है. फिर उसमें क्या होगा, वी विल हैव चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड में क्या होगा, इट विल बी अनदर ऑब्जेक्ट. फिर चाइल्ड में विल हैव चाइल्ड वन, it will be another object. You're getting the point. It's like a, so whatever रियल डॉमेट्री है ना, HTML के अंदर HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर we have div tag के अंदर we have this thing ना, it's like a tree nested structure. Same nested structure is happening here in, but it is very fast. Why it is very fast? Because we are maintaining only this object in memory, in the JavaScript browser memory. So we are not manipulating the real DOM directly, we are manipulating the virtual DOM.
Okay, so this virtual DOM, and this is nothing but your, what I will say, this is nothing but your the JSX. What you see now, whatever JSX you write, that is nothing but a simple plain JavaScript object. How does React convert it and all those things? We can study more about that thing. But to us it will not matter too much because we know okay what is happening inside. तो ये क्या होता है फास्ट क्यों है बिकॉज इट इज मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट इज फास्ट ना बिकॉज वी नो ना अच्छा ये पेरेंट में ये चाइल्ड है यहाँ मुझे अपडेट करना था आई विल सिंपली गो एंड राइट द कोड व्हाट आई विल डू आई विल गो सिंपली राइट अच्छा वर्चुअल डॉम में जाओ गो टू द रूट है ना एंड गो टू द चाइल्ड चाइल्ड वन रूट में जाके कोई रूट नहीं गो टू द चाइल्ड एंड चाइल्ड में जाके चाइल्ड टू पे जाके आप चेंजेस कर दो कुछ तो है ना डॉट वट एवर इक्वल टू वैल्यू वट एवर यू वांट टू पुश सो what I'm trying to say this is easier ना अब suppose for the same thing you have to write the same thing in real DOM तो क्या करना पड़ेगा you have to go here okay open this suppose I want to change this value or I want to change Okay. some color है ना I'll go here inspect here अभी problem क्या है this tag does not have a ID does it have a ID No, sir. तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी काम करेगा क्या नहीं काम करेगा तो व्हाट यू टू डू गो हियर राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट उसके बाद उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड एंड देन इन एचटीएमएल ओके उसमें मिस्टेक भी हो जाता है ना बहुत बार की बहुत बार आपको समझ में नहीं आती टू गो एंड चेक एंड एवरीथिंग है ना सो that is difficult also and it is not it will take more time to manipulate the real DOM also going inside it traversing but traversing a object because that is JavaScript object is much faster because it is a JavaScript object in memory तो वो फास्ट होता है वो मतलब like it's a in the memory it's a, just a code piece of code okay so you don't have to go and check as a real DOM में क्या mounted and whatever you don't have to do anything बस आपके पास मेमोरी में है जब भी चेंजेस हुआ आप इसमें चेंजेस करो और ये जो चेंजेस करोगे इसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा रियल डॉम में बट वो कौन कर रहा है वो रिएक्ट इंजन कर रहा है सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग अच्छा ये इसका कन्वर्जन फ्रॉम दिस हाउ डज इट गेट कन्वर्टेड इनटू एचटीएमएल पेज है ना इनटू एचटीएमएल और वी कैन से रियल डॉम है ना तो रियल डॉम पे जो होता है वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज दिस conversion from JSX to HTML from this object to HTML is done by React तो वो कन्वर्जन नहीं होता है अभी सपोज क्या होता है सपोज आपने रेंडर किया ऐप में गया और ऐप में सपोज you want to do conditional rendering and you are only changing this text correct you're not changing everything correct you're only changing this text okay based on the condition so what will happen react knows अच्छा ये चेंज कर रहे हो तो वो जाएगा सिर्फ इसको ही अपडेट करेगा so it's very fast actually the way it does that it's very fast but for that you have to study very advanced things like data structures and all those things how does it work ठीक है वो आपको उतना ही that's not required for you for normal interviews you're going for very like top level companies then you have to go that much deep है ना और otherwise नहीं we don't have to go normally but at least virtual DOM क्या है basics क्या है that you should know ना because that is very commonly asked question in the interview okay so this point is very important always remember this point okay that uh, what is a virtual DOM what is a real DOM how does it work okay and ठीक है Okay. actually is good I will not take much सर एक time डाउट हाँ डाउट है पूछो सर okay ये पूछो JSX हम लोग बराबर जानते हैं कि HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में लिखने में हेल्प करता है पर ये सर JSX क्या है एक्चुअली में लाइब्रेरी है या कोई लैंग्वेज है या कोई प्रोसेस है एक्सटेंशन है क्या है हाँ कंटेंट बोलो फिर से बोलो ना बता दो जिस सर जिस JSX जो हेल्प करता है HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में लिखने में पर एक्चुअल में JSX है क्या ये तो हम लोग ऑब्जेक्ट है ना एक्सटेंशन वही प्रोग्राम तो बताया जानते हैं हाँ ऑब्जेक्ट ये हाँ ये ऑब्जेक्ट है ना ये तो यही तो मैंने बोला ये जो है we can easily translate this into a JavaScript into a object ठीक है अभी तो मैं दिखाता हूँ सर अभी मैं कहीं मैं सपोज पढ़ा था तो सर पता था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो कुछ नहीं सब भूल जाओ ठीक है अभी हम्म,
यहाँ पर एग्जांपल देखना, ये ReactJs का डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, देखो इसने क्या लिए बोला है कि ये हमारा एक JSX है, करेक्ट। यस सर। फिर JSX में कुछ कुछ इन्होंने लिखा हेलो वट एवर नेम, है ना, कुछ कुछ किया और भी JSX थोड़ा सा, ये JSX है ना, बट अल्टीमेटली इट्स अ, उसमें इसने ये किया इफ ये दिस डू दिस थिंग, है ना, बट सॉरी सॉरी नॉट दिस, दिस इज अ JSX, ये दो JSX है ना। नाउ ध्यान से देखो, ये देखो इसने क्या बोला, JSX रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेरा नहीं है, ये ReactJs जो इसने बनाया इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या दिया है इसने, कि सपोज ये H1 टैग है, उसके अंदर हेलो वर्ड है, कैसे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्रिएट एलिमेंट जिसका टैग क्या H1 है, क्लास नेम दिया हुआ है ग्रीटिंग, और उसका चिल्ड्रन फिर वहां पर हेलो वर्ड है, ठीक है। तो ये क्रिएट एलिमेंट है जो ये दो ना, फिर ये पूरा तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ना, ठीक है। ये और कॉम्प्लेक्स है, मतलब बस समझने के समझोगे ना। अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट ओनली, कर्ली ब्रेसेस आगे मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है ना। तो तुम जो देख रहे हो JSX के फॉर्मेट में H1 टैग में, अल्टीमेटली दिस एंड दिस इज द सेम ना, और दिस इज कन्वर्टिंग इनटू सम ऑब्जेक्ट, है ना, समथिंग लाइक दिस, कुछ तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ, JSX नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज दो, हर कंपोनेंट का अपना अलग ऑब्जेक्ट होगा, यस सर। बट रूट तो एक ही है ना। व्हेन वी से रूट, दैट ऐप तो एक ही है ना। अभी index.js में व्हेन वी माउंट द रूट कंपोनेंट, सो एवरी उसका तो एक कंपोनेंट होगा ना। मान लो ऐप के अंदर वी हैव टू कंपोनेंट्स है ना, व्हाटएवर, ठीक है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है, बट मेन तो ऐप है। तो ऐप दिस इज एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें उसका एक उसमें होगा चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, फिर उसके अंदर चाइल्ड 3 होगा, वो जैसे 3 स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट में होता है ना। तो सेम चीज ये मेंटेन्ड है ना, this is maintained in the same way ना। So we can say JSX nothing but an object, and through JSX only, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्चुअल डॉम कैसे बनेगा। ओके। तो वर्चुअल डॉम भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना, और कुछ नहीं है। वर्चुअल डॉम क्या होता है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो अपना मेंटेन किया हुआ ऑब्जेक्ट जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और वो कंपेयर करता है रियल डॉम वर्चुअल डॉम को, कैसे कंपेयर करता है वो, how does it does, but ultimately we can say this JSX is nothing but your virtual DOM only. Okay? JSX is part of the virtual DOM, it's not entire virtual DOM. But अभी ऐप हो गया तो वो तो पूरा virtual DOM, पूरा entire virtual DOM हो गया ना। यस सर। App is the root component, no? It will be the entire virtual DOM. It consists of the entire virtual DOM ना, because इसके बाहर तो कुछ नहीं जाएगा ना। This is the starting point ना of the React app, React DOM. तो यही है ना, रूट में डालो, जो रूट हमारा एलिमेंट है उसमें डालो, है ना। तो that's it. So entire virtual DOM is there. Okay, so ये बोलना है, suppose somebody asks you virtual DOM, just say that we represent component using JSX. Okay, and ultimately React, we return the JSX, which is nothing but which is getting converted into the virtual DOM. Okay, and the virtual DOM is now React converts the virtual DOM into real DOM. यही ओके। है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिमाग लगाना है। वर्चुअल डॉम तो वो क्वेश्चन क्यों पूछता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्यों पूछता है, ठीक है, वाई, बिकॉज वो पूछता है, उसको सिंपल कॉन्सेप्ट पता करना है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। रियल डॉम मतलब क्या होगा, ये वाला रिएक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है ना, एंड ये भी तो दिस इज आल्सो रियल डॉम, देखो ना ये क्या है, रियल डॉम है ना, रूट, वो ये और ये प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। तो ये उसके लिए हमें ये लगेगा। और अगर हमको वर्चुअल डॉम मतलब क्या हो गया कि अच्छा हमको कंपोनेंट मैनिपुलेट करना है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इसका एलिमेंट का आईडी क्या है, उसका वो क्या है, वो किसके, वी जस्ट गो एंड जस्ट वर्क, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट लेवल पे क्या होता है। सपोज आई विल गिव यू मोर सिंपल एग्जांपल। अभी सपोज मेरा ये पब्लिक पेज है index.html है ना, सपोज
आई क्रिएट वन मोर फील्ड हेयर, है ना, एंड आई से div id, ओके, इक्वल टू आई कैन से demo1, ठीक है, एंड आई से राहुल, ठीक है, राहुल के, सिंपल है ये, ठीक है। सपोज मैं डेमो में नहीं लिखता हूँ, है ना, सिर्फ आईडी में लिखता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ राहुल, ठीक है। आई गो हियर, राहुल इज कमिंग, इट इज नॉट शोइंग, बट यहाँ पर दिख रहा है, जा क्यों रहा है, ओके, बिकॉज इट इज गेटिंग हिडन, हिडन तो नहीं होगा, ओवरलैप कर जा रहा है सर वो पेज। हाँ वो इमेज के वजह से हो जा रहा है, लेट मी रिमूव द इमेज, ये इमेज हमको नहीं चाहिए, तो इधर है इमेज, ये सब हटाता हूँ मैं, ठीक है, इमेज हटाता हूँ, इमेज हटाने से हो जाएगा आई गेस, इमेज आई रिमूव, अच्छा वो ओवरलैप हो जा रहा है, नीचे है क्या, अच्छा है ना यार राहुल, है देखो, ठीक है। यस अब सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस राहुल को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड, ओके, हाउ कैन आई डू दैट थिंग, सर वो जेएसएस का हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, तुम जब दो, हमारा ये जो मैंने लिखा है राहुल है, ये किस पेज में, index.html पेज में, यस सर। मुझे कुछ भी कोई इशू नहीं है, एक पहले बार लोड होने दो पहले बार लोड हो गया, पहला बार लोड हो गया। अब मुझे कहीं तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, आप उसको यहाँ लिखना चाहते हो index.js में, वहाँ लिखो, इफ यू वांट टू राइट इन app.js इन द कंपोनेंट, वहाँ लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, but somewhere you to write some either or whatever you want to write, I don't care, if you want to write JavaScript here also, you can write here also ना, using script tag, ठीक है, ये तो पता ही है ना, so using that also you can write JavaScript code, I don't care, whatever you want to write, I'm asking simple question, whatever you want to write, however you want to write, I don't care. My simple point is that I have to write some JavaScript code which will run once the page is loaded, it will run and remove this Rahul, but वो मैं कहाँ लिखूंगा, how I can do that thing? तो app.js में मैं क्या लिखूंगा बताओ, app.js में लिखता हूँ, क्या लिखूंगा app.js, क्या लिखूंगा, हाँ, मुझे रियल डॉम एक्सेस करना है, क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से नहीं होगा, बिकॉज आईडी दिया ही नहीं है इसको, दिया नहीं है ना आईडी, कैसे एक्सेस करोगे तो, देन यू टू राइट व्हाट, app.js में लिखो या यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो, है ना, या यहाँ लिखो, आपको लिखना सेम ही कोड पड़ेगा, व्हाट, डजंट मैटर, यू राइट हियर हियर हियर, डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली रियल डॉम पे एक्सेस कर रहे हो ना लोड होने पर, तो मैटर नहीं करता जब भी आपको करना है, इफ यू राइट हियर यू टू राइट अगेन व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी बाई टैग नेम, फिर टैग नेम में मुझे क्या डालना पड़ेगा, बॉडी टैग है, फिर बॉडी टैग टैग में मुझे उसका इनर एचटीएमएल देना पड़ेगा, बहुत चीज है ये कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है, देखो ना कितना कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, एक सिंपल से चेंज करना है मुझे, आई वांट टू रिमूव दैट थिंग, ओके, और सपोज आई वांट टू रिमूव दैट ऑन बटन क्लिक, इट्स बिकम इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, टू मैनिपुलेट अ रियल डोम इज बिकम वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू रिएक्ट, इज वेरी सिंपल ना, बिकॉज रिएक्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो किसी कंपोनेंट के अंदर ही तो होगा ना, यस सर। हाँ, तो वो कंपोनेंट में जाके वी कैन इजीली डू कंडीशन रेंडरिंग, अच्छा इस कंडीशन पे इसको यहाँ से रिमूव कर दो, बिकॉज वी डोंट केयर ना, कि वी डोंट केयर कि ये मेरा एचटीएमएल पेज है, इस एचटीएमएल पेज का एक लंबा सा ट्री है, करेक्ट, ये मेन देखो, इसको मैं बंद करता हूँ, दिस इज द रूट एचटीएमएल, करेक्ट, सब कुछ इसके अंदर है, दिस इज द मेन रूट ऑफ द ट्री, इसको बोलते हैं डॉम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री, तुमको, तो अभी मैं पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ, सपोज यू टू फाइंड समथिंग, यू टू ट्रेवर्स द एंटायर थिंग, अच्छा ये कहाँ पर है, किधर माउंटेड है, ठीक है, और फिर मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, यू ट्रेवर्स एवरीथिंग ना, एवरी टाइम, अच्छा यू टू गो हेयर देन हेयर देन हेयर, मिस्टेक भी होता है ना, और कोड भी कॉम्प्लेक्स है, पहुंचने में टाइम लगता है, कभी कभी परफॉर्मेंस भी इशू होता है, बहुत एक सिंपल चीज है,
बट वही चीज अगर मेरा यूजिंग रिएक्ट, बिकॉज उसमें हम लोग कंपोनेंट्स में सब डिवाइड कर देते हैं, तो सपोज आई वांट टू रिमूव दिस लर्न रिएक्ट, तो कंडीशन लिखूंगा कि अच्छा बटन क्लिक पे डोंट रिमूव दिस थिंग ऑन बटन क्लिक। अच्छा ये आई डोंट वांट टू रिटर्न दिस थिंग, आई विल मेक वन मोर कंपोनेंट, इसका नाम दूंगा मैं यहाँ पर वेर वाई दूंगा, और सेम चीज रखूंगा, यहाँ से लर्न रेट हटा दिया। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लर्न रेट को लिखूंगा लर्न एंगुलर, तो अब यार इसको मुझे रिमूव करना है ये टैग को, तो मैं ये टैग ही रिमूव कर दूंगा यहाँ से, खत्म हो गया बात ना। फिर इस इट्स वेरी सिंपल टू डू इन रिएक्ट बिकॉज कंडीशन रेंडरिंग है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग रिटर्निंग एक्स आई रिटर्न व्हाट वाई बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ है ना, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो हमारा काम हो गया ना। इसको रिमूव नहीं करेगा रियल डॉम से, इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको रिमूव नहीं करेगा, ओनली इसको देखेगा। चाहिए ये चीज हमने हटा दी है कंपोनेंट से, ये वर्चुअल डॉम से, या वी कैन से फ्रॉम जेएसएक्स वी आर रिमूविंग दिस थिंग करेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इट विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पर ये माउंटेड था, ऑब्जेक्ट का किस प्रॉपर्टी में था ये, you easily go there and remove that thing, so it's easy to do at the component level। ठीक है, it's easy to do in the component level, so React is doing like that thing, it is very fast। ठीक है, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नॉट अंडरस्टैंड बट बेसिक थिंग ये पूछना है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन वो व्हाट दे वांट टू आस्क, व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डॉम एंड रियल डॉम। ठीक है, Yes, sir. वर्चुअल डॉम का मतलब क्या होता है कि वर्चुअल डॉम होता ही, समझ लो वर्चुअल डॉम मतलब डॉम ही नहीं है वो, वर्चुअल डॉम नॉट अ डॉम, मतलब ये जो हमें जेएसएस दिखता है ये एचटीएमएल थोड़ा ना है, ये तो सिर्फ हमारे हमारे लिए बनाया गया है। दिस इज वर्चुअल ना, दिस इज नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल, दिस इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट ना, दिस इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना आपका एचटीएमएल पेज में, दिस दिस इज नॉट रिलेवेंट ना, ये है ही नहीं ना, ये तो हमें, तो ये इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल डॉम कर रहे हैं। रिएक्ट रिएक्ट इसको, इसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे, रिएक्ट वही चीज एक अपना जो ऑब्जेक्ट मेंटेन किया उसमें करेगा, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू अ रियल डॉम अल्टीमेटली। ठीक है, इट्स फाइन, लाइक फॉर नाउ टुडे इज गुड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ये दिस टॉपिक इज दैट्स व्हाई इंटरव्यू लास्ट ना, this topic is a little bit difficult to understand, that's why interview the interview Yes, why sir. they will ask the easy question ना, जहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है तो आपको वही पूछेगा ना, हाँ, ऑब्वियसली दे वो विल हम जज। सारा सारा इंटरव्यूअर जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहता है, रियल डॉम। रियल है ना, तो वो और वो भी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो डेवलपर, उसको भी तो, वो भी तो, हर आदमी को अपना अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, सो ठीक है, उसका टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ आज के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अभी रिएक्ट का ही फोकस करेंगे ज़्यादा, ठीक है, इंटरव्यूज में, और नेक्स्ट टाइम मैं हुक्स पे लूंगा, हुक्स पे जो लोग तुमने पढ़ा है, और बाकी इनका क्लास हो गया है, हुक्स का इनका पीरियड चल रहा है, तो हुक्स पे मैं पूछूंगा क्या कंसेप्ट है। और बट ये वर्चुअल डॉम रियल डॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, और टाइम तो हमेशा कम पड़ जाता है बिकॉज